के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनर्जी के बारे में। द एंटायर चैप्टर ऑफ एनर्जी विल बी कवर्ड इन दिस वन वीडियो, सो स्टिक टू द वेरी एंड। स्टार्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इधर एक बैट्समैन है, ठीक है, और उसे एक शॉट मारना है सामने की तरफ, तो उसके लिए उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसके अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, उतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो शॉट मार सके। तो ये है हमारा सिंपल आइडिया ऑफ एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क। मगर इधर एक क्वेश्चन आना चाहिए। अ क्वेश्चन शुड अराइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? इफ एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। हियर्स हाउ। अगर यहाँ पर कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसे सामने की तरफ शॉट मारना है, तो वो क्या करेगा? वो अपना बैट सामने की ओर घुमाएगा। He will turn his bat in the straight direction if he wants to hit straight. So that explains for our direction. And what about force? जितना ज्यादा दम से मारेगा वो बॉल को, उतना ज्यादा वो बॉल दूर जाएगा। अगर कम फोर्स से वो लगाएगा तो फिर बॉल दूर नहीं जाएगा। अगर ज्यादा फोर्स से लगाएगा तो फिर एकदम दूर जाएगा बॉल। अगर कम फोर्स से लगाएगा तो फिर थोड़ा नजदीक ही गिरेगा बॉल। सो दैट इज द आइडिया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। अब वर्क और एनर्जी दोनों का SI यूनिट क्या है? दोनों का SI यूनिट है जूल। एंड दिस इज FAQ, frequently asked question in examination, that what is the SI unit of what is the SI unit of work? Then you need to write joule. Now what is the meaning of joule? Joule का मतलब क्या है? Joule is nothing but Newton into meter, where Newton is the unit of force and meter is the unit of distance. एक कनेक्शन बनना चाहिए। जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर, बराबर, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है हमारा? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल होता है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी तक तो बात हुई एनर्जी, वर्क, जूल, SI यूनिट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स की। किसके टाइप्स? एनर्जी के टाइप्स। एनर्जी हैज टू मेजर टाइप्स एंड दोज आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड है, तो फिर इसे आप ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर इस चैप्टर का आपका मेन पार्ट इस पर ही डिपेंड होता है। तो फिर अगर आप ये अच्छे से नहीं सुनेंगे तो फिर ये आपका चैप्टर वीक रह जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं एक आसान शब्द में बताता हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। बस यही है आपका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको क्या करना है? आपको यही सब इंग्लिश में रखना है। कैसे रखेंगे? एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स रेस्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड एनर्जी विच ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है, अगर ये बॉल रेस्ट में है,
ये बॉल का नाम y रख देते हैं, ये बॉल रेस्ट में, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर ये बॉल मूव हो रहा है, ये बॉल घूम रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ये हो गए एक एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, in the examination you will be asked to write what is the definition of potential energy and give its one example, and that will be carrying 2 marks in your examination, right? So potential energy, kinetic energy, the point is done. Moving on to the next point, which is kinetic energy depends on speed and mass of the body. Now this kinetic energy क्या है? An energy which object possesses due to its state of motion that depends on the mass and the speed of the body. आपकी बुक में एक क्वेश्चन होगा कि दो गाड़ियां हैं, उसमें से एक है हमारा ट्रक, सॉरी 2 व्हीकल है, एक है हमारी गाड़ी, दूसरी है हमारा ट्रक. On one side there is a car and on the another side there is a tractor or a truck. Both are going with the same speed and both hit the wall at the same time. Which one of those will be applying a greater force on the wall? And your answer is the truck. Why? Because the truck is carrying more mass than the car. Truck has more mass than car and therefore greater force applied. This is a very simple concept but yet a tricky one. So kinetic energy depends on speed and mass of the body. I just explained through the example of the car and the truck. Moving on to the next point. Potential energy equals m into g into h. What is potential energy? Potential energy का मतलब होता है mass into gravitational acceleration into height. अब आपके बुक्स में क्या होगा, आपके बुक्स में सारी की सारी वैल्यूज दी होगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 3 वैल्यू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट की मल्टीप्लाई करनी है, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। पर इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बीच में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज कहता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। And how is that equal to mechanical energy? Let us know through an example. Let us understand about mechanical energy now. What is mechanical energy? Mechanical energy is basically that it is the sum of the kinetic and the potential energy applied. Now, if I say this in another language, it means whatever kinetic energy, whatever amount of kinetic energy that I am applying should also give as the result of the total amount of potential energy which is I am receiving. And by saying this, I mean that whatever amount of kinetic energy is applied to a body, the same amount of potential energy is released from the body. How? Let us understand with a very nice example that is given in your textbook, and it is like this. A diagram like this is shown in your textbook, and I am sure that there may be graphs or some type of graphical representations above this tractors or vehicles, you can say. And what is this diagram trying to tell us? Let us understand in simple language. Now, I am applying energy on this truck. I am applying a specific energy on this truck so that it can reach till here. So that the truck can reach till here. I am applying a specific energy on this truck so that it can reach till here. So the truck has full kinetic energy but zero potential energy. Why? Because kinetic energy depends, we just learned that kinetic energy depends on speed and the mass of the body, and here we are giving speed to this body. Mass the body already has, so we are giving external speed to the body, and the body therefore possesses kinetic energy. But when the body reaches on top, all
the energies, which are the kinetic and the potential energy, are equal. Why? Because kinetic energy is drained, just like the battery of the phone drains when it is used for a long period of time. The kinetic energy is drained by the time it reaches the hilltop. Therefore, kinetic and the potential energy becomes equal and equally becomes equal to one another. But here you can see that potential energy is more when the truck is falling down. Why? And the reason for that we can actually find in the formula for the potential energy, that is mass into the gravitational acceleration into height. Here we are not only providing mass the body already, we are not only providing the gravitational acceleration, which are two inbuilt things on this truck, but also a height, because it is falling. ये ट्रक गिर रहा है, ये जो व्हीकल है वो गिर रहा है, तो वो किसी ना किसी हाइट से ही गिरेगा ना. ये तो इधर चढ़ रहा है, वो गिर रहा है. इसी की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्योंकि क्यों होगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि वो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी की, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट. अब ये कोई हाइट से गिर रहा है तो इसमें सिंपल सी बात है, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इसमें. So therefore we can conclude that this diagram is a very nice explanation for mechanical energy. Why? Because as I said in the beginning, that mechanical energy is that if I am applying a certain amount of energy to the body, which is in the form of the kinetic energy, the same output I should receive as potential energy. Here we have learned kinetic energy, potential energy, work, force, distance, it's all SI unit. So we have learned this diagram, we have learned mechanical energy, we have learned all the formulas, we have learned whatever is to be learned in this chapter. And I hope till now, if you have watched this video very carefully and sincerely, then you must have understood the entire gist of the chapter just in few minutes. And if you like this video, then don't forget to subscribe to the channel and also mention other topics or other chapters which I should explain further in my future. Thank you.